to this video, and in this video we are going to read about the summary of one act play The Hour of Truth. So video टिकी start करिबा पूर्वरु आपण माने जदियो आम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती देन शीघ्र ही जाइंकी सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को प्रेस करंतु. सो फर्स्ट आमे जानिबा इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स कोन सब थिला द आवर ऑफ ट्रूथ रो वन एक्ट प्ले रे. सो इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स होची Robert Baldwin जे गोटे मेन कैरेक्टर. Then next comes his wife Martha and his son John and his daughter Evie and Mr. Marshall. Then the opening scene sets a hot Sunday afternoon with a description of weather and the Baldwin's family anxiously awaiting for someone's return. So scene टा केमिति स्टार्ट हेतला. scene जेतोले स्टार्ट हेतला से गोटे संडे आफ्टरनून टाइम थिला जोटा कि खरा बेला थिला संडे रो आ बहुत गरम लागुथिला. वेदर टा बहुत हॉट एंड ह्यूमिड थिला एंड बाल्डविन फैमिली एंशियसली माने बहुत अपेक्षा करथिले जनकर रिटर्न को. ओके 27 years old man is smoking a pipe while his mother has made little progress in the last half hours and Evie hides her nervousness. So এই पॉइंट रे कोन लिखा है ना जॉन जे की गोटे 27 इयर्स ओल्ड मैन थिला से कोन गोटे पाइप को स्मोक करला माने सिगरेट टाणु थिला वाइल तो तार मदर जहा सब चिंता करथिले से तांको चिंता धारा किछटा प्रोग्रेस आनिथिले आउ एवी से बहुत नर्वस हे जाइथिला. देन द नेक्स्ट लाइन सेज द फैमिली experiences a tense silence pause. So से फैमिली टा पूरा एते चिंता करूथिला कि से पूरा टेंस है कि माने बहुत चिंता रे से पूरा चुप बसथिले समस्ते. ओके Evie repeatedly look out of the window onto a sultry road. So Evie कोन करथिला से जेहेतु नर्वस थिला से बारंबार कोन विंडो बाहर को माने झरका बाहर को झांकी कि से एकुटे माने लोनली रोड को से देखुथिला. ओके Martha and Evie exchanges dialogues about John being expected home and his habit of leaving his umbrella behind. So, आ भितर ए सीन रे मार्था और एवी बहुत कथाबार्ता होचंती काकू जॉन को नहीं की जॉन रो हैबिट्स ऊपर जॉन रो जो अम्ब्रेला छाड़ दबार बिहेवियर माने सब आडे जो आडे जीव से ता अम्ब्रेला को भूली जाई आसे से ही हैबिट्स ऊपर सब कथाबार्ता होचंती. डार्क स्काई फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग. सो कोन हठात कोन हैला ना घड़ बहुत जोर लाइटनिंग हैला. Then Martha anxiously looking out and John rises, knocks ashes from his pipe, then goes to his father's room to check the window. So जेतबले एंती घड़घड़ी बिजुली मारी की लाइटनिंग हैला देन मार्था कोन विंडो बाहर को अनेला जॉन जे स्मोक करथला सिगरेट से कोन कला ना एश ट्रे रे तार सिगरेट को बंद करी की से कोन जाईकी ता फादर को रूम रे जाईकी विंडो टा खोली की देखिला कि कौन होची बेली. मार्था कॉल्स हिम अ गुड बॉय. सो मार्था जॉन को गुड बॉय कहला. देन Evie asks why Mr. Grisham wants to see John and learns Mr. Grisham has been arrested. So ए लाइन रे कौन कोहा हिची ना एवी पचारला कि काहे कि मिस्टर ग्रिशम जॉन सहित कथा हबा पई चाहुचंती. आफ्टर ऑल मिस्टर ग्रिशम अरेस्ट ही जंती से काहे कि जॉन सहित किछि कथा हबा पई चाहुचंती. देन मार्था कॉल्स हिम अ गुड बॉय. एटा ऑलरेडी पढ़ा सच्ची. So Martha explains the father must have evidence against Mr. Grisham, revealing a conflict between the father's business dealing and loyalty to Grisham, which Martha only discovers in the paper. So कौन ना जो हमको दिया है से पैराग्राफ रे तो से पैराग्राफ रे हमें कौन जानिया पे पहले तार समरी कि मार्था जे थिले से कोन कहउतिले सी तांको फादर माने रॉबर्ट बाल्डविन को से प्रोटेक्ट करूथिले. कोन कहउतिले कि तम बापा किछि भूल कर नथिबे. ओके तम बापा कोन तांको पाखरे किछि एविडेंस थिबो अगेंस्ट मिस्टर ग्रिशम. ओके जोटा कि बिजनेस डील पई कि किछि गोटे थिबो जोथि पई कि सी एमिति ग्रिशम माने कथा हबा पई चाहुथिबे रॉबर्ट बाल्डविन को सहित. एंड मार्था कहिले कि से निजे भी एते प्रॉपर्ली जानी नथिले ए मैटर विषय रे जेते पर्यंत से पेपर ने देखिले. सो ए सीन रे कोन हेथिला ना
मार्था जे थिले मार्था को ए विषय रे किछि जणा नथिला कि किछि गोटे डिस्प्यूट हेछि रिगार्डिंग बिजनेस। तो सी कौन कले ना न्यूज पेपर जो देखुले न्यूज पेपर रे पिक्चर बाहर थिला से थ्रू रे मार्था जानिया पई पाइथिले कि किछि गोटे डिस्प्यूट हेछि। द सीन ब्लेंड्स फैमिली टेंशन विथ hints of legal or business scandals involving Mr. Grisham and the father. So ए सीन रे कौन हेछि ना फैमिली बहुत टेंशन रे अछि एंड से जानिया पई किछि हिंट पाउचंती थ्रू द पेपर और थ्रू द न्यूज पेपर कि मिस्टर ग्रिशम आउ रॉबर्ट बाल्डविन को भितरे किछि गोटे बिजनेस को नै कि झगड़ा की कॉन्फ्लिक्ट चलीछि। देन the page shows a dramatic excerpt. So line 18 ru 36 जाके इस summary रे mentioned अछि ए पेज रो summary रे mentioned अछि। Okay, from a play involving the characteristics. So एथरे को characters माने involved अछंती एवी मार्था and John discussing about his father. Okay, involvement with a bank wrecking and मिस्टर ग्रिशम्स इन्फ्लुएंस। सो बैंक वेकिंग को नहीं कि वेकिंग माने कौन गोटे धर डिस्प्यूट किछि बैंक रिलेटेड। ओके, धर तुम एम्प्लॉइज को ठीक भाव में बिहेव कर नथिबो कि रॉबरी करथिबो तमरो क्लाइंट्स को नहीं कि ओके, सो से सब रिलेटेड। Then Evie questions whether her father was involved in the bank incident and probes if he knew what was happening, suggesting the authorities treated him unfairly. So कौन एवी डाउट कला कि बापा जदियो ये बैंक केस रे इन्वॉल्व थिबे कि तो सी तांको मदर जे मार्था थिले तांको सी डाउट करी पचारला कौन बापा भी ये बैंक केस रे इन्वॉल्व अछंती कि कौन बापा भी से सब क्लू जानी चंती कि जोटा नेसेसरी। Okay, then Martha defends the father, claiming that he's acted under Mr. Grisham orders and wasn't guilty. She believes he discovered Mr. Grisham's action by accident. So Martha कौन कहले ना मार्था कहले कि तम फादर केबे हेले भी गोटे रॉन्ग डिसीजन कि रॉन्ग जिनस करि नथिबे का से निज छुआ मान को बुझौचंती मार्था कि तम बापा केबे हेले भी रॉन्ग डिसीजन कि भूल काम करती नहीं से केबे हेले भी किछि भूल काम करि नथिबे सी काम करथिले अकॉर्डिंग टू व्हाट ग्रिशम वाज इंस्ट्रक्टिंग हिम। मिस्टर ग्रिशम जहा बाल्डविन को इंस्ट्रक्ट करथिले से सेही अनुसार काम करूथिले। ओके, मार्था's claim noting the authorities wanted the father to testing against Grisham, not indict him. सो एवी कौन डाउट कले ना एवी मार्था को क्लेम माने मार्था कहले कि तुम फादर इन्वॉल्वड नहांती तुम फादर किछि भूल काम करि नहांती सी फर्स्ट एवी कौन कले ना टिके डाउट कले कि मामा फादर को साइड नहीं कहउचंती काहे कि ना एवी को ए कथा ऊपर किछि ट्रस्ट नथिला। ओके, सो द सीन शिफ्ट्स व्हेन सो ए सीन माने कोन मार्था और एवी एबे कथा होथिले तो से सीनटा शिफ्ट हो गला माने से टॉपिकटा चेंज हो गला जेतबेले जॉन एंटर कला। देन जॉन एंट्री आस्किंग अबाउट द विंडो एंड व्हाट ग्रिशम वांट्स विद द फादर। मार्था एंड जॉन exchange anxious dialogues about whether the father knew anything, mentioning an assistant cashier in the context of investigation. So कौन ना जो माने आफ्टर जॉन एंटर कले से वन एक्ट प्ले रे सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो गला। सो मदर आउ जॉन माने तांको मामा आउ तांको पुओ से माने कहा ऊपर डिस्कस करिया पे लागिले ना वेदर तांको बापा इन्वॉल्वड अछंती कि नाही से केस ऊपर एंड ही मेंशनड अ नेम नोन एज असिस्टेंट कैशियर हुज नेम वाज डोनोvan. Then the page contains the dramatic dialogues from number 37 to 51 lines between the John, Evie, Martha and an offstage father. The conversation revolves about the legal or moral conflict involving John Grisham, who is accused of exploiting his employees and depositors. So
एठी जॉन हवा जगह रे एठी बाल्डविन हबो. देन सो हियर आर सम की पॉइंट्स. सो ए पेज माने 37 लाइन रु नहीं 51 लाइन पर्यंत जतिक सबू अच्छी ए सबू भितरे जॉन एबी आ मार्था कैरेक्टर अछंती. सो से माने सबू का विषय डिस्कस करूथिले किछि कॉन्फ्लिक्ट हेछि कि नाही ग्रीष्म को विषय रे. ओके सो ग्रीष्म आउ तांको बाल्डविन तांको बापा बाल्डविन को विषय रे कि से माने किछि रॉन्ग बिहेवियर देखैचंती कि एक्सप्लॉइट करचंती किछि एम्प्लॉइज माननकु हैला. तो सेही विषय रे से माने डिस्कशन करथुले कि मैटरटा कोन हेइथिबो. देन लाइन नंबर 37 टू 38 रे डोनोvan ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया हेछि कि डोनोvan हु वाज मैरिड ऑन अ स्ट्रांग डोर साइन. सो डोनोvan विषय कुहा हेछि डोनोvan जहा को जॉन देखिथिला कोठी ना एथलेटिक क्लब रे जॉन देखिथिला डोनोvan को. ही सेड सो डोनोvan कोन he was like a assistant cashier and has been there for 8 years. So सी कौन 8 वर्ष धरिकी सेठी कैशियर रही सारे एंड ही वाज टेकिंग केयर. से आगु को भी तांको लाइफ रे से कौन से जिनसर केयर नहीं थांते. ओके ही गॉट मैरिड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट. सो सी से विश्वास रे मैरी करथिले. बट द नेक्स्ट डे कौन हेथिला ना बिलीव ऑन हिज सस्पेक्ट wrong doing until a cash revealed he had been taken care of his life, prompting a bolt out of a clear sky revelation. So कौन हेथिला ना डोनोvan as a cashier से कौन 8 years हेलानी सर्व करूथिले. ओके 8 years हेलानी काम करूथिले. देन तो से आगो को शेयर हे जाइथिले सेही स्ट्रेंथ रे he got married. देन द नेक्स्ट मॉर्निंग गोटे प्रॉब्लम आसी तांको सामना रे ठिया हे गला. ओके द प्रॉब्लम वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. ओके एंड वेरी सडन. देन फादर इन्वॉल्वमेंट. सो लाइन नंबर 39 ठु नै कि 41 पर्यंत फादर कर इन्वॉल्वमेंट कोन थिबो से विषय रे डिस्कशन चलथिला. जॉन क्लेम्स फादर न्यू ग्रीष्म बेटर देन एनीवन एंड is the sole witness against him, naming John after Grisham Balvin. So कौन हैला ना फादर को इन्वॉल्वमेंट केंती अछि जॉन कहीं की जिनसटा भाबुथिले बेली से क्लैरिफाई करथिला ए लाइन धिरे कि जॉन जे अछि से कहउथिला कि फादर बहुत बेटर भाबरे ग्रीष्म को जानि छंती. ओके तो बाल्डविन कौन ग्रीष्म को बहुत भल भाव जानते. ही इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम. सो जदियो ग्रीष्म मिस्टर ग्रीष्म किछि भी भूल करंती देन तांको बापा को माने बाल्डविन को शीघ्र जना पड़िबो. सो एई जिंसटा तांको काहे के लागिथिला बिकॉज बाल्डविन निज पुअर ना माने जॉन रो ना ग्रीष्म को ना को आधार करी रखिथिले. ओके सो मार्था's caution. सो मार्थांकर लाइन्स कौन थिला से कौन कहिया पे चाहूतिले सेटा लिखा है 42, 46 और 48 नंबर पैराग्राफ रे. सो ए पैराग्राफ रे से कौन कहिथिले she wants John that father will do his duty truthfully and advises him not to speak improper about Grisham, asserting father has nothing against Grisham and will tell only the truth. So मार्था कौन कहले ना जेतबेले से जॉन कर ए सब कथा सुनले मार्था कौन कहले कि ना तम बापा किछि भूल करनांती से जहा भी करिवे तांको ड्यूटी पाई कि से सब ठीक काम करिवे एंड ट्रूथफुली काम करिवे. ओके सो सी अगेंस्ट ग्रीष्म माने बाल्डविन ग्रीष्म कर केबे अगेंस्ट भी जीवेनी कहीं सी होचंदी बहुत ही क्लोज फ्रेंड बट ऑल्सो सी सब बेले ट्रूथ काम ही करेंगे माने जो कामटा ठीक बाल्डविन से कामटा करेंगे. ओके मार्था अकॉर्डिंग टू मार्था. देन जॉन्स रिसेंटमेंट. सो जॉन्स रिसेंटमेंट कौन जॉन कौन कहया पे चाहूतला. सो जॉन कौन कहया पे चाहूतला सेटा 43, 45, 47 एंड 49 पैराग्राफ रे अछि. सो
John feels Grisham enriches himself by underpaying employees and robbing depositors, believing father will expose the truth even if it's plenty. सो कौन जॉन डाउट कले कि ग्रीशम जी माने मिस्टर ग्रीशम जी सी कौन करती ना अंडर पेइंग माने जो एम्प्लॉयर्स माने थांती तांको अंडर काम करती से तांको कम सैलरी दियंती हला डिपोजिटर्स जो माने आसंती से तांको रॉब करती तांको किछि पैसा नियंती ओके सो जेहेतु तांको बापा माने जॉन रो बापा रॉबर्ट बाल्डविन ए सब कथा जानती सो तांको टिके भय लागुथिबो ओके even it's plenty. So the page shows two numbered script excerpts 52 and 53 from a dialogue between John and Evie. So ए जो 52 and 53 stanza अछि एटा John आउ Evie भितरे conversation टा अछि. John asked Evie what Grisham had to say to him. So John कौन पचारचंती ना एवी को पचारचंती कि मिस्टर ग्रिशम को मो सहित को कथा कथा हबार थिला माने कौन सब कथा कथा हबार थिला एबी स्ट्रज एंड टर्न्स अवे टू द विंडो तो एबी कौन एबी किछि न कहि कि मुंडटा को विंडो आडू को करिकी झांकिया पई लागिला नथिंग दैट इट हैज स्टार्टेड टू रेन सो एति भितरे कौन वर्षा हबा पई बहुत जोर लागिला एज द वेदर वाज एज द क्लाउड कवर्ड द स्काई एंड इट वाज डार्क सो वर्षा हबा पई लागिला एबी रिप्लाइड यस सो जेतबेले जॉन एबी को पचारथिला कि ग्रीशम कोन मते किछि कहिया पई चाहुचंती देन एबी कोन कहथला एबी मुहटा बुलेई दे कि विंडो आड़ को चाहुथला देन किछि समय परे से रिप्लाई कला यस देन आफ्टर अ पॉज जॉन abruptly crossed to the door and flinging it open suggesting a sudden shift in his reaction to the conversation or the rain सो कौन है ना जेतबेले से यस कहिला जॉन कौन कला एब्रप्टली क्रॉस माने कौन से हठात क्रॉस करी आसला डोर को फ्लंगिंग इट ओपन माने से डोर टाको आ क्लोज न करी ताको खोला छाड़ी गला सो इट वाज अ शिफ्ट इन हिज रिएक्शन सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो रहउची जय जगन्नाथ।